Assalamualaikum everyone. I hope all of you are well. Welcome back, and we are still discussing numbers. In the last video, we left off at a question. वो सवाल ये था, the question was, are all decimals rational numbers? Before I get to the answer to that question, I'm going to talk about another group of numbers or another set of numbers, which is irrational numbers. Irrational numbers आपके पास क्या होते हैं? अगर rational numbers can be expressed in the form of a over b, where a is an integer, b is an integer, b is not equal to 0, तो irrational क्या होंगे? It is a set of numbers that cannot be expressed as a ratio of two integers a and b in the form a over b, where b is not equal to 0. So any number which is not a rational number is going to be an irrational number. ठीक है. अब इरेशनल नंबर का एक सबसे जो बड़ा हम एग्जांपल करते हैं, वी बीन डूइंग इट एवर सिंस 5th 6th grade, ever since we were introduced to circles, that is the number pi. Pi is one of the most common examples of an irrational number. Pi क्या है? Pi is a decimal, and we are saying that it is an irrational number. So does that not answer the question that we raised? The question that are all decimals rational numbers? So no, all decimals are not rational numbers. There are some decimals जो irrational भी होते हैं. अब सवाल ये है कि हम उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं. फिर हमें कैसे पता है कि कौन सा डेसिमल एक रैशनल नंबर है और कौन सा डेसिमल एक इरेशनल नंबर है. सबसे कॉमन चीज़ तो ये, अगर तो आप उस डेसिमल को एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो फ्रैक्शन आपके रैशनल नंबर्स की कंडीशन पूरी करती है, देन येस इट इज़ अ रैशनल नंबर, दैट डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर. बट इट गेट्स वेरी इनकन्वीनियंट टू चेक इफ़ यू कैन represent it in the form of a fraction every single time you come across a question. So we have some basic rules जिससे हम डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. बट बिफोर आई गो to that, I am going to discuss the types of decimals. We have 3 basic types of decimals. Number 1, आपके पास terminating decimals होते हैं. Number 2, आपके पास recurring decimals होते हैं. Number 3, आपके पास non-recurring, non-terminating decimals होते हैं. ये होते क्या हैं? Terminating decimals are basically digits after the decimal they terminate. टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. तो एक पॉइंट आता है जिधर आपके डेसिमल प्लेसेस ख़त्म हो जाते हैं. रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग इज सम डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल दे रिपीट इनडेफिनेटली. इनडेफिनेटली का मतलब है कि वो कंटिन्यू करते रहते हैं, आपको नहीं पता कि वो कब जाके रेपिटेशन ख़त्म होगी. दैट इज़ रिकरिंग. नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लाइक द नेम सजेस्ट, दे आर डेसिमल्स दैट डू नॉट टर्मिनेट, जो ख़त्म भी नहीं होते, डेसिमल प्लेसेस उनकी ख़त्म नहीं होती, बट दे आर नॉट रिकरिंग एज वेल. उन डेसिमल प्लेसेस में कोई रेपिटेशन नहीं होती. टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज थ्रीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे? वो वाले डेसिमल्स होंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हैं. 0.5, यू कैन सी दैट आफ्टर द डेसिमल प्लेस आपकी 0.5 पे आगे नंबर रुक गया है, आगे कुछ नहीं है. या यू कैन से 0.25 that we already proved were rational numbers. So always remember that terminating decimals are rational numbers. ठीक है. recurring decimals की आपके पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है? recurring decimal can be 0.66666, it can be 0.777 or 0.737373 और इवन 0.847847. अब डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं उस पर कोई कंडीशन नहीं है. आपका एक डिजिट रिपीट हो सकता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स में आपके 2 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल में आपके 3 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, जैसे थर्ड एग्जांपल में. द कंडीशन ओनली हाउएवर इज़ दैट देयर शुड बी अ रेपिटेशन. ठीक है. वो 5वें डिजिट के बाद दोबारा आपके फर्स्ट 5 डिजिट्स रिपीट हों, फर्स्ट 6 डिजिट्स रिपीट हों, दैट is not a problem, but there should be a very clear repetition. And non-recurring, non-terminating decimals का example क्या होगा? Pi. So pi is a non-recurring, non-terminating decimal. You can see
1415925 एंड सो ऑन. आप 100th डेसिमल प्लेस तक भी चले जाएंगी तो कोई रेपिटेशन नहीं होगी. लेकिन डेसिमल्स ख़त्म भी नहीं हो रहे होते, वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे होते, वो रिपीट भी नहीं हो रहे होते. दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ irrational numbers. To sum it all up, terminating decimals are rational numbers, recurring decimals are rational numbers, non-recurring, non-terminating decimals are irrational numbers, and we have done examples for each type. Now, another question that I had when I was doing this topic in my O-levels was, if non-terminating decimals are rational numbers, let's have a little bit of space. So the question is, अगर non-terminating decimals rational numbers नहीं होते, आप एक तरफ कह रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, बट इन ऑल आवर मिडिल स्कूल ग्रेड 6, 7, 8 आप हमेशा पाई को 22/7 लेते आए हो, और 22/7 तो एक रैशनल नंबर है. एक तरफ आप कह रहे हो कि पाई एक इरैशनल नंबर है बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर. But then in all your calculations in 6, 7, 8, you have been taking pi as equal to 22/7. But 22/7 is a rational number. How can you say that an irrational number is equal to a rational number? Think about it. Pause the video, think about it, and let's see if you get the answer. Okay, so the answer to this was actually very simple. अगर आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो वो होती है 3.1415925 and then so on. It's a non-recurring thing, so it will continue to whatever decimal place you want it to continue to. But if you look at 22/7, 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू 3.142857 142857 होती है. It is a recurring decimal. Pi is not exactly equal to 22/7, but it's close enough. आप जब pi को round off करते हो 3 decimal places पे, वो आपके पास आता है 3.142. And if you round this off to 3 decimal places, you also get 3.142 or 3.143, which is approximately the same, which is why to make your calculations easier, you replace pi with 22/7, but always remember that the exact value for both is not equal. They're close, they're approximations, but they are not equal, which is why 22/7, it's true that 22/7 is a rational number and pi is an irrational number. इनकी values same नहीं है. 3 decimal places तक same होती हैं, but when you continue after that, then the values differ. The last thing before we move on, I want to talk about कि आप recurring decimals को represent किस तरह करते हैं. So हमने बात तो कर ली है कि recurring decimals किस तरह होते हैं. Basically, how do you represent a recurring decimal? अब यहाँ पर you can see that 6 is the digit that is repeating. So what you will do is you will write 0.6 और जो भी digit repeat हो रहा है उसके ऊपर एक line लग जाती है. That is to show that that digit is repeating and it is a recurring decimal. तो ये क्या हो जाएगा 0.7. This is going to be 0.73. अब दोनों 73 repeat हो रहे हैं तो दोनों पे line लग जाएगी. उसके बाद this is going to be 0.847. line लग जाएगी. So basically whatever digit is repeating, you put a line on top of those digits to show that this is what is being repeated. So 22/7 पे हमारा क्या repeat होगा? 22/7 पे you can see 3.142857 and then again 142,857. अब ये तब के सब repeat हो रहे हैं तो आपके पास इस तरह की एक representation आ जाएगी for 22/7. I hope this is clear. Okay, now let's quickly recap all the sets of numbers that we did and how do we organize them, कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है. सबसे पहले हमने जो 3 सेट किए थे वो थे आपके पास you had integers, you had whole numbers and you had natural numbers. सबसे बड़ा we said integers था. Integers में you have whole numbers which is 0 and positive numbers, and you have negative integers जिसमें आपके पास negative natural numbers आ जाते हैं, right? Then in whole numbers you have natural numbers
which are your positive counting numbers, and you have 0. We did these groups and we talked about how integer is the greatest, then whole numbers and then natural numbers. फिर हमने बात की कि जो integers हैं वो खुद भी एक rational number है, ठीक है, मतलब all integers are rational numbers. So rational numbers is a bigger set than integers. उसमें integers भी आते हैं और उसमें क्या आते हैं, उसमें terminating decimals और recurring decimals भी आते हैं. So अब सबसे बड़ा क्या हो गया, rational. Rational numbers में आपके पास integers, you have your terminating decimals and then you have your recurring decimals. Integers में आपके पास whole numbers होते हैं, negative integers होते हैं, और whole numbers में आपके पास natural numbers और zero होते हैं. Then we talked about irrational numbers and we said that irrational numbers are non-recurring and non-terminating decimals, जिसकी हमने एक example पढ़ी थी pi. Now one more thing, one more set that I'm going to talk about is the set of all real numbers. और वो क्या होता है, the set of real numbers is the set of all rational and irrational numbers. So ये दोनों आपके पास as a set of all real numbers आ जाएंगे, and this diagram or this flow chart is basically a quick summary of all the groups of numbers that you have done in these 2 videos. I hope this makes everything very clear, and I will see you in the next video. Take care everyone. Allah Hafiz.